dear students. Class 6 New Grammar Plus चैप्टर नंबर 9 एडवर्ब्स तक हम पहुंच चुके हैं। मैं आप ये सारी वीडियोस आपको हेल्प करने के लिए बनाती हूं और आपको क्या करना है, आपको मैम की वीडियो को थम्स अप करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करूंगी, आपकी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करूंगी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करिए। फाइन, तो शुरू करते हैं एडवर्ब्स। आपको पता है एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो होते हैं जो वर्ब्स के बारे में और बताते हैं। वो वर्ब कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, कितनी हुई, वो होते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स देखो दो वर्ड से बना है, एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। फाइन, ज़्यादातर एडवर्ब्स के लास्ट में ly लगा होता है। ठीक है, और वो वर्ब के नेक्स्ट वर्ड होते हैं। वर्ब होता है एक्शन वर्ड, कुछ भी करना, जैसे द सन शाइन्स ब्राइटली। तो शाइन्स तो वर्ब है और सन कैसे शाइन कर रहा है, वो शाइन कर रहा है ब्राइटली। सो ब्राइटली इज एडवर्ब हियर। फाइन, ये सब आप रीड कर लीजिएगा। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट पेज नंबर 115 कराती हूँ। ठीक है, कुछ पिक्चर्स हमें गिवन है और कुछ हमें एडवर्ब्स गिवन है, हमें उसके अकॉर्डिंग उन्हें मैच करना है। तो जब कोई डांस करता है तो उसके डांस मूवमेंट को ग्रेसफुली कहते हैं, मीन्स शी इज़ डांसिंग ग्रेसफुली। ठीक है, जब आप खेल रहे होते हो तो आप बहुत ही एक्साइटेड हो रहे हो, तो दे आर प्लेइंग एक्साइटेडली। ठीक है, अब ये बच्चा हमें दर्द में कराता हुआ, इसके शायद दांत में दर्द है, तो ही इज़ क्राइंग पेनफुली, दर्द से करहा रहा है। मम्मा ने बेबी को हग किया हुआ है, विच इज़ अ वेरी लविंग मोमेंट, सो मम्मा इज़ हगिंग द बेबी लविंगली। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं जो भाग रहे हैं, तो दीज हॉर्सेज आर रनिंग स्विफ्टली। फाइन, आगे बढ़ते हैं। लुक एट द अंडरलाइन एडवर्ब, सर्कल द वर्ब्स दे मॉडिफाई। एडवर्ब तो हमें गिवन है, लेकिन हमें वो वर्ब बताने जिसके बारे में वो हमें उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मोनिका स्पोक सॉफ्टली इनटू द हॉर्स ईयर्स। तो क्या करा मोनिका ने? स्पोक किया। हाउ? सॉफ्टली। द टीचर वॉज हैप्पी विद अनिल बिकॉज ही हैड डन हिज होमवर्क केयरफुली। अनिल ने क्या किया है? डन हिज होमवर्क। एंड हाउ? ग्रेसफुली। हैड डन पूरा कर लेना आप। द वाटर फिल्टर कंपनी रिन्यूज द कॉन्ट्रैक्ट एनुअली। क्या करती है वो कंपनी? रिन्यू कर देती है, हर साल नया करती है, एनुअली साल में एक बार। ठीक है, द गर्ल वॉक्ड इज द वर्ब हेयर। हाउ शी वॉक्ड? शी वॉक्ड कॉन्फिडेंटली. I like the fact that Neha does all her work cheerfully. What did Neha do? Neha does all her work. And how? Cheerfully is the adverb here. I have never seen a storm like this. इसमें जो verb है वो है seen and when never. Adverb of time है. Let's work on this project from tomorrow. Work is the verb here. Tomorrow is adverb. The warrior rode into the city ट्रिम्फेंटली। वॉरियर होता है जो लड़ाई करता है, सो द सर्कल्ड वर्ड हिज रोड एंड हाउ? ट्रिम्फेंटली मीन्स जीत से। टग्ड इज द वर्ब हेयर। हाउ ही टग्ड? प्लेफुली. आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ चेंजिंग माई जॉब। थिंकिंग इज द वर्ब हेयर एंड हाउ ही इज थिंकिंग? इज थिंकिंग सीरियसली. सीरियसली इज adverb here. Moving on to the next page, which is page 116. समझ में आ रहा है बेटा? Look at the underline adverb, circle the adverb they modify. ठीक है, अब हम जो हैं adverbs हमें फिर से अंडरलाइन है और हमें जो एडजेक्टिव को वो मॉडिफाई कर रहे हैं उन्हें हम सर्कल कर देंगे. सम पीपल आर ऑलवेज एंग्री. मतलब एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. द वाइट वॉश इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. ऑलमोस्ट एंड कंप्लीट इज द एडजेक्टिव हेयर. आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी. लॉन्ग है यहाँ पर. दिस फ्रूट इज क्वाइट डिलीशियस. डिलीशियस. द शर्ट लुक्स अ लिटिल ऑड ऑन हिम. ऑड. The writer's language is very flowery. Flowery. This cap is rather big. Big. This sentence would be less interesting. Less interesting. Interesting. This sambar is too spicy. Spicy. It's a bit cold. Cold in this room.
काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर विच टेल्स यू हाउ द एक्शन इज डन. शी डांस्ड ब्यूटिफुली ग्रेसफुली. हाउ शी डांस्ड ब्यूटिफुली ग्रेसफुली. एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं विच टेल्स यू वेयर द एक्शन टुक प्लेस. वो क्वेश्चन कहाँ हुआ, हेयर, देयर, अपस्टेयर्स, आउटसाइड, इनसाइड. ठीक है. उसके बाद आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. इट टेल्स यू व्हेन द एक्शन टुक प्लेस. टुडे, येस्टरडे, नाउ, देन, लेटर, सूनर. ठीक है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस द एग्जैक्ट नंबर. फ्रीक्वेंसी में नंबर आता है द टाइम ऑफ दैट एन एक्शन टुक प्लेस. ठीक है. आई हैव सीन द मूवी ट्वाइस, वंस अ वीक. एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स यू टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितना काम हुआ है. जस्ट, नियरली, वेरी. ठीक है. और ये जो इसमें सारे एडवर्ब्स गिवन हैं ये आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा. इट विल हेल्प यू. Fill in the blanks with suitable adverbs from the box. Write whether the adverb in each sentence describe how, when and where. We hurriedly packed our bags and left for school. ठीक है. Shekhar willingly gave all his pocket money to the blind man. How? We must learn to decline invitations politely. And this is also how. देखते जाओ आप. It was an interesting talk and we listened to it alternatively. How you listened alternatively. Fifth, the doctor said that your health would gradually improve with regular exercise. Gradually. When? Gradually. I am late because unexpectedly some visitors came home. How? Unexpectedly. My father occasionally meets my school teachers. When? Occasionally. Our dance troupe performed magnificently. How they performed? Magnificently. We walked cautiously up the broken steps. How they walked? They walked cautiously. I tiptoed silently around. Tiptoe माने अंदर घुसना या धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ना. Around the house in order not to wake up the baby. Rajat has done well in his tournament. How he had done well. Ipsa worked hard to get selected in the school hockey team. How she worked? Hard. The water of the river was flowing fast. And the answer here is how. Since you were in meeting when I phoned you, your secretary asked me to call you later. When they called you? They called you later. Aslam had almost finished all his work by time. When? Almost. Tina will now begin a story. When? We reached the airport late. When? Late. Girish read an interesting article about Chilka Bird Sanctuary yesterday. When she read? Yesterday. Solve the crossword with the help of the clues. ठीक है. अभी मैं इसके सामने आप इसके आंसर आपके सामने ही लिख लेना, बाद में मैं आपको फिल भी करा दूंगी. ठीक है. Karan worked at his sums steadily for an hour without a break. Steady means continuously. Arjun often stops at the corner shop to buy an ice cream. Often. Opposite of happily is sadly. Kavita went to school regularly. She rarely missed a school, even a day. An adverb of manner that has two e's, मतलब दो e होंगे उसमें, and begins with the letter after e. E के बाद शुरू होता है freely. Form an adverb from the abstract noun true, truly. डाउन में आएंगे. Our school magazine is printed annually. I know what is happening in my city because I read the newspaper daily. If present equals to today, future equals to tomorrow, the past equals to yesterday. So easy. The chief guest came early. Hari dislikes water intensely. He says he will never learn to swim. अब आपको ये चार्ट अच्छे से देखना है. देख लो आप इसे कैसे फिल करोगे. ठीक है. स्टेडली, एनुअली, ऑफन, सैडली, डेली, येस्टरडे, ट्रूली, फ्रीली, नेवर, रेगुलरली, अर्ली, एनुअली. फाइन. ठीक है बेटा. अगर वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा. ओके. आगे चलते हैं एक्सरसाइज एफ पर. यूज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी होता है नंबर, हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन टुक प्लेस. ठीक है. चलो. आई यूजुअली पुट थिंग्स अवे आफ्टर आई यूज़ दैम. मैं खाली आंसर बोलूँ. आई वॉच टेलीविजन एवरी इवनिंग. आई यूजुअली यहाँ पे ऐड कर दो.
रन आउट ऑफ द क्लास व्हेन द बेल रिंग्स। और सेंटेंस को दोबारा लिख लेना, नहीं तो मैम गुस्सा करेंगी। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ एट नाइट। आई रियरली ईट स्वीट्स। 6th, I always get up late on Sundays. I frequently help my mother clean the house. I often read interesting books. I practice dance regularly in the evening. I play with my friends in the park once a week. Fine. I play chess with my mother every day. I play carom with my father regularly. Fine. Okay, आगे बढ़ेंगे. Let's come on to the next page. Position of adverbs. ये सब रीडिंग मटेरियल है. Position of manner. ठीक है, ये सब आपको रीड करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे. मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी, लेकिन आप मोस्ट इंटरेस्टेड हो बुक एक्सरसाइजेज में, इसलिए मैं आपको बुक एक्सरसाइजेज ही कराती हूँ. ठीक है, एक्सप्लेनेशन वीडियो आप मेरे आईईओ की बुक्स में देख लीजिएगा. मैंने मोस्टली सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. क्लास 6 की आईईओ वाला प्लेलिस्ट खोल लेना. Rewrite the sentences using the pair of adverbs in the correct positions. The dogs were howling yesterday and continuously. ये दो adverbs हमें given हैं, इन्हें हम अपने sentence में join कराएंगे. Yesterday the dogs were howling continuously. Today the children enjoyed themselves at the beach thoroughly. फिर से repeat कर रही हूँ. Today the children enjoyed themselves at the beach thoroughly. Now I will read carefully. Now I will read carefully the instructions for running the washing machine. Again repeat कर रही हूँ. Now I will read carefully. या ऐसे करो. Now I will read the instructions carefully. ठीक है. Now I will read the instructions carefully for running the washing machine. We enjoyed the picnic a lot, but it was very noisy. We enjoyed the picnic a lot, but it was very noisy. Black Beauty is a very interesting book. I enjoyed reading it immensely. बहुत मज़ा आता है ये पढ़ने में. पढ़िए आप लोगों ने. ओके, चलिए. एडजेक्टिव ऑफ और एडवर्ब हमें ढूंढना है. ठीक है. We must go to Dehradun in the near future. This is acting as adjective. The tiger crept near. Adverb of place. The tailor in Kirti Nagar is good. It's adjective. How is the tailor? He is good. Adjective है. He stitches well. Well is adverb of manner. How he stitches? He stitches well. So it's adverb of manner. Rubbish is a little slow. He needs to work fast. Fast is adverb here. Our climate is changing at alarming fast pace. Fast pace is adjective here. ये adverb है ऊपर वाला. How far is Kusum's house from her office? It is adverb. You can see the horizon in far distance. It is adjective. Fine. आगे बढ़ते हैं. Tick the correct answers. Let's quickly walk or we will not be able to reach on time. No. Let's walk quickly or we will not be able to reach on time. Second one is the correct one. Meera works hard from morning to evening. This is the correct answer. Third में, second one, Ravi's handwriting is better than Jones. Delhi is very hot in the summer. This is the correct sentence. My music class began 3 weeks ago. This is the correct one. Deepak submitted the maths homework late. आगे बढ़ते हैं. Work with your partner and write down how many times do you drink water? Twice, thrice. नंबर लिखना है आपको. How sunny is it outside? Very. If you had to catch a bus, how would you run? Fast. How do you speak to your teacher? Politely. How many adverbs did you use? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो मैंने तो पूरे 4 यूज़ करा दिए हैं आपको. Fine. Degree of comparison. वीडियो थोड़ी लॉन्ग होती जा रही है. डिग्री ऑफ कंपैरिजन खुद रीड कर लेंगे. फटाफट आंसर लिखो भाई. फास्टर देन कपिल. Second one, more easily than the heavier ones. Third is fastest. Misha was the slowest. Vishal cycled more slowly. Tara swam more swiftly. Finally, the hurdle race. 2. The Jacob jumped over the hurdles more smartly.
Exercise K. Rewrite these sentences with a comparative degree. I shall work hard in the school from tomorrow. From tomorrow I shall work hard in the school. Namita plays the veena. Veena होता है वो जो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है. More skillfully than anyone I know. Namita plays the veena more skillfully than anyone I know. I shall do better in the next painting contest. I shall do better in the next painting contest. Radhika arrived later than I did. Radhika arrived later than I did. You had better stayed at home to get over that cold. You had better stayed at home to get over that cold. You must write faster next time to answer all the questions. Vikramaditya ruled more wisely than most other kings of his time. ये time है बेटा. Vikramaditya ruled more wisely than most other kings of his time. It is snowing more heavily than ever. It is snowing more heavily than ever. Gurinder finished her drawing earlier than the other girls. Gurinder finished her drawing earlier than the other girls. Fali does his assignments more carefully than his sister. Fali does his assignments more carefully than his sister. Kareem can speak French more fluently than Aman. Kareem can speak French more fluently than Aman. Fine, आगे बढ़ते हैं. Last exercise है yes. As Maninder tiptoed quietly into the house, the window blew the door shut loudly. The light came on suddenly. His father was sitting comfortably in his favorite armchair. He asked Maninder, "Where were you?" "I'm sorry, father," said Maninder. "My bicycle had punctured tire. I had to drag it to the repair shop." At that point, Maninder's mother came into the room. She said softly, "We must buy a new bicycle tomorrow." Wow, bicycle आने वाली भाई. "This one has become very old. Thank you, mother," said Maninder gratefully. And if you are thankful to me, आपको पता है ना क्या करना है. फटाफट वीडियो को थम्स अप दे दो और भैया अपने सारे फ्रेंड्स और जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर कर दो. आई एम हेल्पिंग यू. और आपको क्या करना है, आपको मैम की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है. और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख देना. बट बेटा थम्स अप करे बगैर नहीं जाना. ठीक है. बाय.